Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Shukla. नमस्कार। मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक तथा शेयर बाजार के ताजा समाचार आपके लिए लेकर आए हैं। उन पर हम चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामाचंद्रन। सुषमा जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। वार्म वेलकम सुषमा। थैंक यू निखिल, थैंक यू राजेश। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है राजेश। Prime Minister Narendra Modi expresses confidence that India will emerge as third largest global market in the aviation sector in coming years. Domestic stocks witness gains of around 1%. Sensex closes above the 61,000 mark. Nifty settles above the 17,900 level. And global stocks rise ahead of US inflation report. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया, भारत आने वाले वर्षों में विमानन क्षेत्र में तीसरे सबसे बड़े वैश्विक बाजार के रूप में उभरेगा। घरेलू शेयर बाजार में लगभग 1% की बढ़त, सेंसेक्स 61,000 से ऊपर और निफ्टी 17,900 अंक के स्तर से पार और वैश्विक बाजारों में अमेरिकी इन्फ्लेशन रिपोर्ट को देखते हुए बढ़त का रुख। Prime Minister Narendra Modi has expressed confidence that India will emerge as the third largest global market in the aviation sector in the coming years. He said new opportunities are emerging in the aerospace manufacturing sector under the vision of Make in India and Make for the World. He said India can become a maintenance, repair, overhaul, MRO hub for the aviation sector. Addressing a virtual meeting with French President Emmanuel Macron on the agreement between Air India and Airbus, Mr. Modi today said civil aviation is playing an instrumental role in the growth of the country. He said the Indian aviation sector will need more than 2,000 aircraft in the next 15 years. Terming this deal historic, Mr. Modi said this shows strengthening of strategic partnership between India and France. He said this deal will help in fulfilling the growing demands of the aircraft. French President Emmanuel Macron congratulated India for offering an opportunity for the strategic partnership in the aerospace sector. He said French companies are fully dedicated to developing new areas of cooperation. He said France has achieved much with India in various sectors, including space, cyber, defense, and energy transition. Sushma, what do you think of this opportunity that India has got to make in India and make for the world? I think this is a very, very major purchase, and not only a purchase, a collaboration for the future. First, if you take the issue of purchase, we are in Air India is going to be buying 250 aircraft. Apparently, it's a larger number, but that the order is going to be phased out. But this is a huge number, and even globally, this is one of the largest orders after probably a decade or so, because of various problems in the civil aviation sector. For instance, the last few years, the pandemic, and then of course the Ukraine war, the demand for aircraft has declined. One of the advantages that Air India has got in making this huge order right now is that a lot of aircraft were commissioned by other countries, for instance China and Russia, but they have not been able to pick them up. Of course, they are probably in the process of being manufactured, but these aircraft will probably become
come more quickly than they would have in the normal course. So this is a great advantage for Air India. Secondly, of course, when you talk about the collaboration, this is another thing that is going to happen, that you are going to have a lot more manufacture of these of components for these aircraft, and then maybe in the long run, at some stage, we may be able to manufacture civil aircraft. We already have come into manufacturing fighter aircraft. That's the big news of the last few days. So this is also going to help. Now, we remember that Air India was a loss-making public sector enterprise. It has been sold to a private sector company, that is the Tatas, and it is now trying to revive. It was saddled with a huge amount of losses. It is now trying to revive, and one of the ways to revive is to go to reach out to key markets. And for an Indian carrier, the key markets are where the Indian diaspora is, and that is in the United States, where probably Air India is going to seek destinations which are not the normal San Francisco and New Jersey. They are trying to go to other destinations within the U.S., which could be Chicago and various other, southwest of the U.S., places where the Indian diaspora has settled and where they are eager to have aircraft, airlines coming straight to them. So this is going to be a huge development, a huge leap for Air India in its revival process. So this aircraft which has been ordered is a A350 twin aisle aircraft, and it's a long haul aircraft. This, along with the erstwhile Indian Airlines, has been using Airbus A320 in all its fleet for domestic purpose. Yes. Combine this with the maintenance, repair and overhaul hub that the Prime Minister is talking about for the aviation sector. It augurs well now, considering that we are going to have now the bigger aircraft along with the already existing aircraft. Well, actually Air India was known to buy Boeings, for their long-haul aircraft. And as you rightly pointed out, the erstwhile Indian Airlines used to buy the Airbus for short haul. But apparently they are also buying, Air India is currently also going to buy the narrow body aircraft for domestic use, for the domestic market as well. So I think, as you rightly pointed out, this will help, in having some uniformity if they are going to set up an MRO center here. Currently, of course, the biggest MRO center in Asia is in Singapore. So we will have it's going to be quite a task to try and bring it to India, but given the expansion of the aviation sector, I think there are very good prospects. But this proposal that the PM has given, that India can become MRO hub, is exciting. No, it has been talked about for quite some time, that India should become an MRO hub, because we have, we are a center, a hub for travelers going all to East Asia, to Singapore and Australia, coming from Europe. They stop in India and then they move on. सुषमा, जैसा भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बहुत ही अपना कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस किया है कि तीसरा हम बड़ा एक मार्केट बनने वाले, कहीं ना कहीं इसमें दो बातें और जुड़ जाती हैं. खासतौर पर मैं जिक्र करना चाहूंगा गति शक्ति योजना का, सागरमाला का, लुक ईस्ट पॉलिसी का. ये सारी चीजें इसमें कंबाइंड हैं, जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब एविएशन सेक्टर हमारा बूम करेगा तो जाहिर सी बात है हमारा जो एक्सपोर्ट का एक दायरा है वो और ज्यादा बढ़ेगा. और अभी हम जो जिक्र कर रहे हैं, जो हमारा डिफेंस सेक्टर, इसमें हम बढ़ाने वाले हैं, बढ़ा रहे हैं लगातार, उसमें काम कर रहे हैं. तो इस पर आप क्या सोचते हैं इन सारी चीजों को अगर हम मिला करके देखें? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. एक तो गति शक्ति की बात है कि जो मैन्युफैक्चरिंग की जो बात है हमारे देश में, और ये जो अभी उन्होंने जो अग्रीमेंट तय किया है जिससे कुछ कंपोनेंट्स धीरे धीरे हमारे देश में बनेंगे, और जैसे मैंने कहा थोड़े धीरे धीरे बनेंगे, लेकिन अभी हाल ही में हमें मालूम पड़ा कि अभी ये फाइटर एयरक्राफ्ट हमारा पूरा इंडिजिनस बन के आया है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और उससे बहुत ही मतलब काफी एक्साइटमेंट हुआ है कि हम भी बना सकते हैं. तो अगर हम डिफेंस एयरक्राफ्ट बना सकते हैं तो हम सिविल एयरक्राफ्ट भी बना सकते हैं. तो एक तो ये है. दूसरा, जैसे आपने कहा सागरमाला की, उस तरह की जो हम सिक्योरिटी इन दिस रीजन, इंडियन ओशन रीजन में हम एविएशन की तरफ से भी हमारी ज्यादा जो
ज्यादा हमारी जो कैरियर्स हैं जी। वहां पर डेस्टिनेशन ज्यादा साउथ ईस्ट एशिया में होने चाहिए, और इंडियन ओशन जैसे सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, वहां भी जैसे मैंने डायस्पोरा की बात की, हमारी डायस्पोरा वहां भी है, सिंगापुर में भी है, मलेशिया में भी है, हांगकांग में भी है। तो जहां हमारी डायस्पोरा और जहां बिजनेस इंटरेस्ट है वो बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, क्योंकि सारी जो बड़ी टेक्निकल टेक जायंट्स हैं उनकी जो एशिया हब है वो इंडिया हुआ या सिंगापुर, ज्यादातर इंडिया है। तो ये बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस के नजरिए से भी ये बहुत ही अहम है, ये जो होने जा रहा है। भारत और फ्रांस का जो रिश्ता है लगातार और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। हम देख रहे हैं पिछले अगर 5 से 8 वर्षों की हम बात करते हैं तो इस बीच में ये दायरा और भी ज्यादा विस्तृत होता जा रहा है और अभी भी ये बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लगता है कि दोनों देश मिलकर के एक और नई महाशक्ति बन रहे, जिससे पूरे विश्व में एक नया मैसेज भी जा रहा है। बिल्कुल। अब अगर हम देखें कि स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर फ्रांस और भारत के जो नजरिया है वो एक तरफा है, और फ्रांस ने कभी जो हमारे देश की जो नजरिया है कि ये सिर्फ यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है और ये इमर्जिंग इकोनॉमीज की जो जरूरतें हैं उनको देखनी चाहिए। फ्रांस इन चीजों के बारे में काफी इसमें अंडरस्टैंडिंग है, काफी रिसेप्टिव है। और जो जैसे मैंने कहा फ्रांस के साथ हमारी जो, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 5-8 साल, वो राफेल डील के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है मेरे ख्याल ये बढ़ती जा रही है, और आपने देखा ही होगा अगर टीवी पे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मैक्रोन का जो उनका मेल जोल, उनकी नोक झोंक तो थी बातों में, वो भी बहुत बढ़िया थी। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैश्विक मूलभूत उपकरण निर्माताओं को आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक निर्माता भारत के साथ मिलकर विकास कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, आपूर्ति श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं, संयुक्त उद्यम और निर्माण इकाइयां स्थापित कर सकते हैं और यहां विश्व के लिए उत्पादन भी कर सकते हैं। उन्होंने वैश्विक मूलभूत उपकरण निर्माता कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से आज बेंगलुरु में एरो इंडिया के दौरान मुलाकात की और ये कहा गया कि मानव पूंजी स्टार्टअप के लिए शानदार माहौल और विशाल घरेलू रक्षा बाजार उपलब्ध हो रहा है, जो कि सबके लिए फायदेमंद हो सकता है। यहाँ पर बात आ जाती है वसुधैव कुटुंबकम की, हम सबको मिलकर के साथ में लेकर के चलने वाले लोग हैं और हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप हमारे साथ मिलकर के काम करिए, हमारे साथ मिलकर निर्माण करिए, हम आपको बहुत कुछ दे रहे हैं। जी, जो एरो शो में खासकर डिफेंस एक्सपोर्ट्स में, वहां पर तो दिखाई दे रहा है कि भारत ने कितनी तरक्की की है। जैसे मैंने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात की, लेकिन बहुत सारे जो विमान हैं वहां पर हमारे देश में ही बन रहे हैं, और खासकर उनके कंपोनेंट्स बन रहे हैं। सबसे बड़ी चीज होती है अगर आप कंपोनेंट्स बना सकते हैं तो तभी आप बड़ी चीज बना सकते हैं। तो ये कंपोनेंट्स धीरे धीरे करके, और हमारा जो HAL है उसकी भी फैसिलिटी उन्होंने काफी कोलैबोरेशन की, वहां भी फ्रांस के साथ काफी कोलैबोरेशंस हुए हैं। फ्रांस की जो कंपनीज है उनके साथ काफी जो साइंटिफिक टेक्निकल कोलैबोरेशंस हुए हैं। तो इस नजरिए से बिल्कुल जो एरो शो है वहां पर दिखाई पड़ रहा है कि आगे का जो रास्ता है एविएशन सेक्टर का क्या है। जी, अब सेंसेक्स पर नजर डालें तो घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 1% की बढ़ोतरी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की प्रमुख 30 कंपनियों का सर्वोच्च सूचकांक 61,000 से ऊपर जाकर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 50 प्रमुख कंपनियों का सूचकांक 17,900 से अधिक के स्तर पर पहुंच गया। वैश्विक शेयर बाजार के सकारात्मक रुख के चलते दोनों सूचकांकों में वृद्धि दर्ज हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 600 अंक यानी 0.99% की बढ़त के साथ 61,032 दर्ज हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक यानी 0.89% ऊपर चढ़कर 17,930 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में आज नरमी आई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.44% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.61% की गिरावट दर्ज हुई। The Sensex and the Nifty today witnessed gains of around 1%. Index of top 30 companies at Bombay Stock Exchange, Sensex, ended above the 61,000 mark. The index of top 50 companies at the National Stock Exchange closed above the 17,900 level. Both stock rose amid positive global cues. The Sensex climbed 600 points or 0.99% to finish at 61,032. The Nifty 50 also surged
159 points or 0.89% to settle at 17,930. In the broader market at the BSE, the mid-cap index declined 0.44% and the small-cap index fell 0.61%, underperforming the Sensex. In the Sensex pack, 19 companies posted gains while 11 witnessed losses. ITC was the top gainer as it rose 3.7%, followed by Reliance, which gained 2.4%. Bajaj Finance and ICICI Bank both added 1.8% each. On the other hand, NTPC slipped 1.1% and Sun Pharma declined 0.9%. Ultratech Cement fell 0.8% and Larsen & Toubro lost 0.7%. In sectoral indices at BSE, 9 sector posted gains while 11 logged losses. Tech and IT, both indices gained 1% each. FMCG and Bankex, both sectors rose 0.9% each. On the other side, realty sector declined 1.8%, utilities index fell 1.7%, and power sector slipped 1.4%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,296 companies gained while 2,205 fell. Shares of 113 companies remained unchanged. Sushma, the whammy over India's retail inflation breaching the RBI's tolerance level was cooled by WPI inflation easing to 4.7% in January. Did that contribute towards the indices edging higher? Definitely, I'm sure it would have, because the higher inflation had caused concern, because that means that the central bank will continue with its rate hikes. And of course, the RBI governor had warned that it's not that we are going to stop at this level. We want inflation to come down to manageable levels, and within, of course, their tolerance band of between 4 to 6%. So this has definitely come as a relief to the markets, and I think they are reacting largely to that. As well as the positive news, like the talk of the civil aviation sector, it's this huge purchase of Air India planes, which indicates that, the civil aviation sector, which is a major player in the economy, is going to be reviving and recovering after the pandemic. And then, of course, they are also, the market is also looking all the way to the US and waiting, like other markets, for the consumer price index of the United States and waiting to see what's going to happen. The IT sector today did pretty well, gained 1%. Primarily, the focus of the investors was on the anticipated slowdown in U.S. inflation, which could result, hopefully, in a favorable Fed policy. What's your take on that? Well, the IT companies look obviously to the U.S. and largely to the U.S., but that is one of their main markets. And they look at the international scenario. We have to remember that IT companies are exporting huge amount in terms of services exports, software exports. They are reliant. They look very closely at the movement of the rupee, the movement of the dollar, and of course the scenario in the United States, because as I said, it's their largest market. So yes, if things are looking up for in the US, and things are looking up for IT companies here. So also the foreign investors, they took out 200,000 crore rupees last year. Yes. But again, like we're talking about how the inflation was taken care of, the domestic investors put in 200,000 crores. So we were kind of, liquidity was not a major problem. Yes, sorry. No, carry on. So the thing is, we have discussed this probably earlier in Market Mantra, that the domestic institutional investors have really saved the Indian market. If you see many other emerging economies, they have been affected by this flight of funds of FIIs back to the US after the
the series of aggressive rate hikes by the U.S. Federal Reserve. But in India, the domestic investors have put their faith in the Indian market. They've put their faith in the Indian story and growth story, and they have ensured that there has not been any crash. And there has been volatility in the markets, certainly, but there has not been any crash. हम देख रहे हैं कि जो हमारा घरेलू शेयर बाजार है उसमें अब स्थायित्व वाली तो बात पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि धमाकेदार वापसी होती है। जैसे आज अगर कुछ शाम को देखते हैं कि कुछ गड़बड़ हुआ, अगले दिन उसकी धमाकेदार वापसी होती है। लगातार ये ट्रेंड हम देख रहे हैं। अब आज का अगर देखा जाए तो मेटल सेक्टर ने जिस तरह से हमें अपना रिस्पांस दिया, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को इफेक्ट करता है, लेकिन जो एक लॉस वाला प्रोसेस लोगों का रहता है उसमें कवर कर रहा है। बिल्कुल। अब ये जो वॉलेटिलिटी है, हमारी मार्केट्स जो है काफी सेंटिमेंट ड्रिवन है, और कई बार ये होता है कि लोग कहते हैं कि देखिए मार्केट्स इस वजह से गिरी हैं, लेकिन अगर हम लोग, आप और हम, जो मार्केट्स को रोज देख रहे हैं, सालों साल देख रहे हैं, तो हम जब कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, मार्केट वापस आ जाएगी, क्योंकि ये एक सेंटिमेंट है जो डर बैठ गया कल किसी वजह से, तो मार्केट वापस आ जाएगी। हाँ, कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो तो अलग बात है, लेकिन ये जो डर और जो सेंटिमेंट ड्रिवन जो चीजें होती हैं वो तो हमें मालूम है कि ये वापस आ जाएंगी। अब जैसे आपने मेटल्स की बात की, मेटल्स में अभी इस वक्त काफी पॉजिटिव न्यूज हमारे देश में आई है कि लिथियम रिजर्व्स वहां पर कश्मीर में आ गए हैं, तो इसकी वजह से मेटल्स के भी काफी इम्प्रूवमेंट हुई है। पिछले साल आपको याद होगा कि मेटल्स में एकदम से गिरावट आई थी जब यूक्रेन वॉर के वक्त, क्योंकि ये डर था कि जो मेटल्स वहां से सप्लाई हो रहे हैं यूक्रेन और रशिया से, उनकी वो बरामदी नहीं होगी। तो उसके बाद 1-2 महीने के बाद वो सप्लाईज फिर आ गई, और फिर मार्केट में वो उसके ऊपर मार्केट ने मेटल्स का उछाल फिर से आ गया। तो ये चीजें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल वॉलेटिलिटी है, लेकिन बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता उसमें। अभी आपने घरेलू निवेशकों का जिक्र किया था, तो घरेलू निवेशकों को आज हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर एक सेक्टर में गिरावट आ रही है तो वो दूसरे सेक्टर को गिरने नहीं देते, उसे होल्ड करके रखते हैं कि नहीं, हम तो इसको संभाल के रखेंगे, और यही शायद वजह है कि ये दूसरे निवेशकों को भी आकर्षित करता है और ज्यादा निवेश करने के लिए। बिल्कुल। ये अगर आपको याद होगा, ये जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं हमारे देश में, काफी सारी बढ़ोतरी हुई थी 2020 में जी, जब पैंडेमिक हुआ था और कोई एरिया नहीं था, एसेट नहीं था जहां ये जो युवा जो निवेशक हैं वो अपना पैसा डालना चाहते थे, वो बैंक से निकाल के कहीं डालना चाहते थे, रियल एस्टेट में नहीं डाल सकते थे, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में ज्यादा उनको नहीं आमदनी मिल रही थी, सोना में नहीं डालना चाहते थे, तो वो इक्विटी में पहली बार आए। तो ये जो ट्रेंड है कि बहुत सारे एकदम से इन्वेस्टर्स आए, ये हमारे देश में भी दिखाई दिया और न्यूयॉर्क में भी दिखाई दिया। काफी स्टडीज में ये पता चला है कि युवक निवेशक बहुत ज्यादा लाखों में आए हैं हमारी मार्केट में, और यही, मैं ये नहीं कह सकती कि सिर्फ ये है, लेकिन ज्यादातर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल निवेशक जो है, इन्होंने इंस्टीट्यूशनली डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स जो है, इन्होंने काफी हमारी मार्केट में इसका सपोर्ट किया है, और उनकी जो उम्मीद है कि ये इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है ये कायम रहेगी। जी, Sushma, you mentioned Ukraine and Russia, they are still at war. There are two assumptions here. If they continue to remain at war, what impact will it have on the inflation and commodities? And second, in the next 6 months, if there is a ceasefire, how will they impact commodity prices and the underlying demand? Well, there's two very big questions you're asking. First is, if it continues to be a war. If it continues to be a war, things are going to remain as they are now. Because if you see, despite the war going on, you're still having supplies coming. And of course, oil is a key issue. Russia has been supplying oil to the European Union and gas to the European Union. And the European Union has been saying that, well, we need to cut down on energy supplies from you, and we don't want you to gain this revenue. So they put a cap on oil purchases around the world. And however, Russia has been able to circumvent all these issues by, for instance, selling oil from which used to go to European Union to India and to China.
So the oil is getting out. Perhaps they're not getting as much revenue, but they are getting sufficient revenue. And as far as natural gas is concerned, the problems actually, again, are occurring more for the European Union. They're facing high energy prices, high costs. So what is happening, what will happen if the war continues? I think things are actually going to get worse. You're going to, get better, I'm sorry. Things are going to get better because you're going to have an institutionalization of certain issues such as financial flows, commodity flows. और वैश्विक बाजारों पर नजर डालें तो वैश्विक शेयर बाजारों ने अमेरिकी मुद्रास्फीति रिपोर्ट और फेडरल रिजर्व के सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों से आज अमेरिकी शेयर बाजार में उछाल का अनुसरण किया। इसके अलावा निवेशकों ने जापान द्वारा नया केंद्रीय बैंक गवर्नर नामित किए जाने के बाद येन में भी बढ़त का स्वागत किया और इसके परिणाम स्वरूप एशियाई शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख देखा गया। जापान का निक्केई सूचकांक 0.6% लाभ में रहा। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में .5% की बढ़त दर्ज हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.3% ऊपर आ गया। वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक दोनों ही मामूली 0.2% के नुकसान के साथ बंद हुए। यूरोपीय शेयर बाजार पर नजर डालें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में यहां तेजी देखी गई। लंदन के FTSE 100 और फ्रांस के CAC 40 में .5% की बढ़त दर्ज हुई। जर्मनी का डेक्स अंतिम समाचार मिलने तक 0.4% ऊपर चढ़कर कारोबार कर रहा था। Wall Street closed sharply yesterday as investors awaited inflation data, which is likely to hint at the path of the Federal Reserve's future interest rate hikes. Gains in Meta platforms after a report that the Facebook was planning fresh layoffs also pushed stocks up. The Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 both added 1.1%, while the Nasdaq Composite Index rose 1.5%. Sushma, what are your expectations on Fed's behavior in the coming day? Well, the Fed has said very clearly that they will continue to be aggressive. They will continue to be hawkish. And for them, of course, we have to understand that is 6% for them, 6.5% may be fine for us, for India, for an emerging economy. It is not fine for them. They look at an inflation rate of about 2%. And this had gone up in middle of last year to about 9%. So it is commendable that the inflation rate has come down so rapidly, and it's clearly because of the aggressive rate hikes of the US, so of the Fed. So it looks like they will continue in the same vein. So whether it is the recession or peak of inflation, some would argue, you comment on this, that interest rates globally are nearing its peak, at least in the interim. It looks like it. It looks like it. But I think even the IMF has warned that you cannot expect, a drawdown, a reduction in interest rates immediately. You are going to have to live with higher interest rates probably for the medium term. Okay. Oil prices today dipped after the U.S. government said it would release more crude from its strategic petroleum reserve, while traders look out for U.S. inflation data for further cues. In intraday trade, Brent crude was trading at $85.65 per barrel, while WTI crude price was at $78.90 per barrel. और सोने पर नजर डालें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य अंतर दिवसीय कारोबार में 230 रुपए ऊपर चढ़कर 56,725 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। मार्च अनुबंध वाली चांदी 250 रुपए की गिरावट के साथ 65,895 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना तेजी के साथ $1,869.60 प्रति ऑन्स पर कारोबार कर रहा था, जबकि अंतर दिवसीय कारोबार में चांदी लुढ़ककर $21.80 प्रति ऑन्स पर चल रही थी। सुषमा जी, सोने के बारे में आपके क्या विचार हैं? गोल्ड पर अगर हम कहना चाहें तो क्या कहेंगे? Will it continue to shine in 2023? I think it will continue to shine as long as Ukraine war चल रही है। मेरे ख्याल जब तक ये वार चल रहा है तब तक तो इसका होगा। सोने के दाम बढ़ते रह जाएंगे जब तक कोई कॉन्फ्लिक्ट बंद नहीं होगा, क्योंकि इट्स अ सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, आपने सही बात कही। मैं भी ये उम्मीद करता हूं कि सोने के दाम इस तरह से कुछ न कुछ बढ़ते ही घटते रहेंगे। सुषमा जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। Thank you, Sushma, for being with us. And before we close, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi expresses confidence that India will emerge as third largest global market in the aviation sector in coming years. Domestic stocks witness gains of around 1%. Sensex closes above the 61,000 mark. Nifty settles above the 17,900 level.
and global stocks rise ahead of US inflation report. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, good night. Namaskar. Market Mantra.